Question. A train travels 360 km at a uniform speed. एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान स्पीड से तय करती है. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. यदि स्पीड उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह वही जर्नी करने में, वही डिस्टेंस तय करने में 1 घंटा कम समय लेता. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की स्पीड हमें ज्ञात करना है. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 1 किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन बाई ट्रेन फॉर ट्रैवलिंग 360 किलोमीटर. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 360 किलोमीटर एंड स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर. आवर्स. टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर मोर. टाइम टेकन फॉर same distance 360 kilometer at speed x plus 5 kilometer per hour. 360 upon x plus 5 hours. स्पीड बढ़ने से समय कम लगेगा, ये कम है और ये ज़्यादा समय है. दोनों का डिफरेंस 1 आवर होना चाहिए. As per question, it would have taken 1 hour less for the same journey. Difference of these two time is equal to 1. 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1. Taking LCM, x plus 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. 360 x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1. 360 इंटू एक्स 360 एक्स प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू x plus 5 cancel, plus 360x minus 360x cancel. 1800 is equal to x into x square plus x into 5 5x, x square plus 5x minus 1800 is equal to 0. or taking right hand side first then left hand side. It is quadratic equation. We can solve by factorization or by formula method. Formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a minus b is 5, b square 5 square minus 4, a is 1, c is minus 1800 upon 2 into 1, x square का कोफिशिएंट 1 is equal to minus 5 plus minus 25 minus minus plus minus 5 plus minus 7225 upon 2. Square root of 7225 is 85 plus minus 85 by 2. Taking plus sign
-5 plus 85 by 2 -5 minus 85 by 2 or 80 upon 2 40 minus 90 upon 2 minus 45. This is negative, therefore we can neglect this value because speed of train cannot be negative. Answer: speed of train is 40 km per hour. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. किसी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया गया है, दो अन्य दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब ये दोनों साइड इस समानांतर रेखा द्वारा समान अनुपात में विभाजित होते हैं. लेट द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ABC. Line DE is drawn parallel to BC. Given in triangle ABC, D is parallel to BC. To prove, AD ratio DB equal to AE ratio EC. Construction: join BECD and draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AD. DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB. Proof: area of triangle ADE is equal to 1/2 base into height. Base is AD and height is EN. Now area of triangle DBE. One by two base DB into height EN. Dividing 1 by 2. Area of triangle ADE upon area of triangle DBE. One by 2 AD into EN. One by 2 DB into EN. 1 by 2 cancel, EN cancel, is equal to AD upon DB. Number 3. Now continued. Similarly,
area of triangle ADE is equal to 1 by 2 base AE into height DM. Number 4, area of triangle DCE is equal to 1 by 2 base EC into height DM. Number 5, now dividing. Area of triangle ADE upon area of triangle DCE. One by 2 into AE into DM upon 1 by 2 EC into DM. 1 by 2 cancel, DM cancel, is equal to AE upon EC. Now we see that triangle DEB and triangle DCE are on the same base DE and between same parallel lines DE and BC. Therefore, their area will be equal. Therefore, area of triangle DBE equal to area of triangle DCE. Number 7. Now look relation 3, 6 and 7. Area of triangle DBE equal to triangle area of triangle DCE. Therefore, from 3, 6 and 7 left hand side are equal. Therefore, their right hand side are also equal. AD upon DB is equal to AE upon EC. We get AD upon DB is equal to, this is right hand side of 3 and this is right hand side of 6, AE upon EC. Proved. This PPT theorem can be also written as other way of representing PPT theorem. Reversing this ratio, BD upon AD is equal to CE upon AE. Second way, AD upon whole line segment AB equal to AE upon whole line segment AC. Third way, BD upon whole AB is equal to CE upon whole AC. This relation can be obtained from
this relation by adding 1 to its sides. Fourth way to represent BPT theorem is AD upon AE is equal to BD upon CE. Second part, in triangle PQR, S and TR points on PQ and PR respectively. PS upon SQ is equal to PT upon TR and angle PST is equal to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. Triangle PQR बनाना है. This is triangle PQR. PQR. S is point on PQ and T is point on PR. These two angles are equal. Angle PST is equal to angle PRQ. It is given that PS upon SQ is equal to PT upon TR. In triangle PQR, since PS upon SQ is equal to PT upon TR, therefore ST is parallel to QR by converse of BPT theorem. Given, therefore ST is parallel to QR by converse of BPT, basic proportional theorem. Their intercepts are equal, ratio of their intercepts are equal, then this line will be parallel to base. Therefore these two angles are equal corresponding angles. Angle PST is equal to angle PQR. Number 1. But it is given that angle BST equal to angle PRQ. PST angle equal to PRQ. Given. Therefore, these two angles will be equal because left hand side are equal. Angle PQ or this angle is equal to angle PRQ. These two angles are equal. Therefore, their opposite sides are equal. PQ is equal to PR. Opposite sides of equal angles. Therefore, triangle PQR is an isosceles. Two sides are equal, therefore it is isosceles. Triangle proved. Question 34. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck at each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. एक कैप्सूल सिलेंडर के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। संपूर्ण लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका सरफेस एरिया ज्ञात करना है। लेट r millimeter is radius of the cylinder. H millimeter is height or length of the cylinder. Then diameter 2r is equal to 5 millimeter. R is equal to 5 by 2 millimeter. H height of cylinder. H is equal to total length minus R minus R. Total length 40 mm minus 5 by 2 mm. ये माइनस कर दिया 5 by 2 माइनस 5 by 2 mm. ये वाला 5 by 2 mm माइनस कर दिया 14 माइनस 5
millimeter, 9 millimeter. Surface area of the capsule equal to cut surface area of cylinder plus cut surface area of two hemisphere. Curved surface of cylinder is 2 pi RH plus 1 hemisphere का curved surface area 2 pi R square and 2 hemisphere का curved surface area twice of this 2 pi RH plus 4 pi R square. 2 pi R कॉमन ले लिया, H plus 2 R. Pi is 22 by 7, R is 5 by 2, H is 9 plus 2 into R is 5 by 2. 2 cancel. 22 by 7 into 5 into 14, 220 millimeter square. Answer. The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. नीचे दिए गए टेबल 400 नियॉन लैम्प के लाइफ टाइम का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है. फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प. लैम्प का मीडियन लाइफ टाइम ज्ञात करना है. लाइफ टाइम इन आवर्स 1500 to 2000. Number of lamps 14 and so on. To find median, first we will prepare cumulative frequency. Third column, cumulative frequency CF 14. 14 plus 56 equal to 70. 70 plus 60 130. 130 plus 86 216. 216 plus 74 290. 290 plus 62 352. 352 plus 48 equal to 400. N equal to sum of all frequencies F 400. These two must be equal. Here N by 2 is equal to N equal to 400. N by 2 is equal to 400 by 2 equal to 200. Just greater than 200 in CF is 216. Therefore, median class is 3000 to 3500 and frequency of median class is 86. F equal to 86. L lower limit of frequency class 3000. CF cumulative frequency just above median class CF 130. Therefore, median class is 3000 to 3500. F is equal to 86. CF is equal to 130. L is equal to 3000. H class size is equal to upper limit minus lower limit 3500 minus 3000 equal to 500. Formula for median: L plus N by 2 minus CF F into H. Putting all these values, we get L equal to 3000. N by 2 is equal to 200. CF is equal to 130.
AF is equal to 86, AH is equal to 500, 3200 minus 130, 70 upon 86 into 500. 7 5 35,000 को 86 से डिवाइड करने पर मिलेगा 406.98. इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 3406.98. मीडियन आंसर. Question 36. Case study 1. India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. मैन पावर का कम कॉस्ट और उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण भारत उत्पादन में प्रतिस्पर्धी है. द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाई फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर. टीवी सेट का उत्पादन एक समान रूप से प्रति वर्ष बढ़ता है. इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर. छठवां वर्ष में 16,000 और नौवां वर्ष में 22,600 टीवी सेट का उत्पादन होता है. हमें ज्ञात करना है नंबर 1. इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट्स. कौन सा ईयर में उत्पादन 29,200 सेट है. लेट द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर बी ए टीवी सेट्स. Since TV sets in factory increases uniformly, therefore production is in AP, arithmetic progression. AP. Let its common difference is D. As per question, production in 6th year 16,000. Therefore T6 will be A plus 5D is equal to 16,000. Number 1. Similarly, as per second condition, production in 9th year is equal to T9 equal to A plus 9 minus 1 8D is equal to 22,600. Solving this, we get the value of A and D. Subtracting minus 3D is equal to minus 6,600. Minus cancel. D is equal to by 3 is equal to 2,200. Putting the value of D in 1. A plus 5 into 2,200 is equal to 16,000. A is equal to 16,000 minus 11,000 is equal to 5,000. A is equal to 5,000. Now we have to find the production in 8th year. Equal to T8 is equal to A plus 7D. A is 5,000, D is 2,200 is equal to 5,000 plus 15,400 is equal to 20,400. Answer. Find the production in first 3 years. S3 sum of 3 terms n by 2 2a plus n minus 1 into d
equal to 0. n is 3. A is 5000, n is 3. D is 2200. 10,000 plus 4,400 is equal to 3 by 2 into 14,400. 2 से कटा दिया is equal to 21,600. Answer. Production in first 3 years is 21,600 TV sets. Number 3. Find the difference of the production in 7th year and 4th year. It will be T7 minus T4 is equal to T7 is A plus 6D. T4 is A plus 3D. A माइनस से कैंसिल 3D इज इक्वल टू 3D का वैल्यू पुट कर दिया 2200 6600 डिफरेंस. आंसर. क्वेश्चन 37 केस स्टडी 2. आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग इन ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर. आलिया और सगुन दोनों दोस्त हैं, पटेल नगर में रहती हैं. सगुन हाउस इज एट द intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from Sagun's house. सेम एक ही स्कूल पढ़ती हैं और सगुन के घर से ज़्यादा दूर नहीं है. सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ पर स्कूल है मान लो. दैट इज ओरिजिन है. आलियास हाउस इज एट ए. आलिया का हाउस ए पॉइंट पर है. एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. आलिया का हाउस यहाँ पर है 1 2 3 4 1 2 3 4 2 यहाँ पर है. ए कोऑर्डिनेट है, इसका 2 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा. आलिया का घर यहाँ पर है. सगुन हाउस इज एट बी. बी पॉइंट पर सगुन का हाउस है. बी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 1. ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस 1. ये है सगुन हाउस. सी लाइब्रेरी सी पॉइंट पर है. सी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है सी पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 2. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 4 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 1 है. 4 1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. यहाँ लाइब्रेरी है, ये सगुन का है. ओ पर स्कूल है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस सूचना के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है. नंबर 1. हाउ फार इज आलियास हाउस फ्रॉम सगुन्स हाउस. आलिया का घर सगुन के घर से कितना दूर है. हमें ए बी निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन आलियास हाउस एंड सगुन्स हाउस is equal to AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया. x2 माइनस x1, x1 y1 माना x2 y2 है. 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. 2 minus 2 0, 3 minus 1 2, 4 equal to 2 unit. Distance of Alia's house from Sagun's house is 2 unit. Answer. Number 2. How far is the library from Sagun's house?
लाइब्रेरी शगुन के घर से कितना दूरी पर है? यहाँ लाइब्रेरी है, बी सी निकालना है, इज इक्वल टू बी सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 4 1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 1, 2 1 4 1, x2 minus x1 whole square, 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 1 minus 1 whole square, 2 square plus 0 square 4 is equal to 2. Number 2. This is number 1. Answer. Library is 2 unit distance from Sagun's house. Number 3. So that for Sagun, school is further compared to Alia's house and library. Distance between Alia's house and school, Sagun's house and school. Distance of school from Sagun's house is equal to OB. Coordinate of origin is 0 0. OB is equal to distance between these 2 points 2 1 and 0 0 is equal to 2 minus 0 whole square 1 minus 0 whole square. Four minus 1 is equal to root 3. Now distance of school from Alia's house, OA, is equal to OA is equal to distance between 0 0 and 2 3, 2 x2 minus x1 whole square 2 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square is equal to 2 square 4, 3 square 9, 13. Root 13 is greater than root 3. Therefore, OA is greater than OB. Or so that Alia's house, Sagun's house and library form an isosceles right triangle. आलिया का घर, सगुन का घर और लाइब्रेरी ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू 2 minus 2 whole square plus 3 minus 1 whole square, 0 plus 4 is equal to 2 unit. BC is equal to 4 minus 2 whole square plus 1 minus 1 whole square, 2 square 4 plus 0 is equal to 2 unit. From 1 and 2 both are equal, we will find AC 2 minus 4 whole square plus 3 minus 1 whole square, minus 2 square 4, 2 minus 1 2 square 4 is equal to root 8. Now AB square plus BC square is equal to AB square plus BC square is equal to 2 square plus 2 square, 4 plus 4 is equal to 8 is equal to root 8 square, root 8 square, root 8 is AC square. Sum of squares of two sides equal to third side, square of third side. Therefore, by converse of Pythagoras theorem, triangle ABC is a right triangle. Proved. 38. Case study 3. A boy is standing on the top of lighthouse. He observed that boat P and boat Q are approaching the lighthouse from opposite directions. A पर
एक लड़का खड़ा है और AD लाइट हाउस है, P और ये पॉइंट Q है। P और Q से दो बोट आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ही फाइंड दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P इज 45 डिग्री। P का एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स दिस एंगल इज 45, एंगल XAP is 45 and angle of depression boat Q is 30 degree. Boat Q का angle of depression, this angle is 30 degree. He also knows that the height of the lighthouse is 100 meter. AD lighthouse का height है 100 meter. Based on the above information, answer the following questions. Number 1, what is the measure of angle APD? Angle APD का measure क्या होगा? Since XY is parallel to PQ and AP is transversal, therefore these two angles will be equal, corresponding angles. APD is equal to angle XAP is equal to 45. Number 2, if angle YAQ equal 30, then angle AQD is also 30. YAQ is 30, then angle AQD is also 30. Why? Because these two angles are alternate angles. Therefore these two angles are equal. फाइंड लेंथ PD. PD लेंथ हमें निकालना है। PD अपॉन AD इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इन राइट ट्रायंगल APD, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड is equal to cot angle APD, cot 45, PD upon AD, AD is 100, cot 45 is 1, therefore PD is equal to 1 into 100 equal to 100 meter. Answer. Find length DQ. DQ लेंथ हमें निकालना है। DQ अपॉन AD इज इक्वल टू cot 30। DQ निकालना है, AD 100, cot 30 इज √3। DQ इज इक्वल टू 100 into √3 मीटर। आंसर